May I request everyone to please settle down, take your seats, and also please ensure your mobiles on silent mode as we should be starting very, very shortly. Settle down, take your seats and also please ensure your mobiles on silent mode as we should be starting very, very shortly. Settle down, take your seats. लिफ्ट से बाहर आएंगे तो May I request everyone to please settle down and take your seats. We should be starting very, very shortly. Also, once again, requesting you to please ensure your mobiles on silent.
And join us, welcome our chief guest. Please join us, welcome our chief guest, ladies and gentlemen, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India, Srimati Nirmala Sitharaman. Welcome, ma'am. May I request all our dignitaries to please join us on the dais. Can we all take our seats, please? A very good evening, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to welcome you all to this special event, the National MSME Cluster Outreach Program, organized by the Small Industries Development Bank of India, or SIDBI, jointly with the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. Before we proceed further, may I request everyone to please rise for the Nadagite, the Karnataka state song.
Shankara Ramanuja Vidyanayuya Vasudeshwara Mantvara Kanva Sharat Shari Punga Pampala Tumi Mati Janna Kumara Vyasara Mangala Rama Satguru Kala Sunyarama Jnana Rama Kabira Jananiya Kanva Jaya Puri Sanari Nari Kankana Chakanara Jnanari Krishna Sharavati Tunga Kaveri Avaranga Chaitanya Paramahamsa Vivekara Jananiya Kanvati Sarva Janagata Shantiya Toda Rasikara Mangala Serupayoda Hindu Kraista Musalmana Parasika Jaina Jnana Jana Jana Bolu Mathura Kala Kama Jagata Hari Kala Rama Kannada Nuli Kuli Daru Vadeha Kannada Tariya Mangala Deha Bharata Jananiya Kanvati Jaya He Kanvata Kamate Jaya He Kanvata Kamate Jaya He Kanvata Kamate. Thank you, everyone. The goal of today's program is to build a sustainable, collaborative environment that supports MSMEs in their growth, ambitions, and contributes to nation building. This venue, the S.V. Narasaya Auditorium at Indian Institute of Science, is dedicated to the founder and chairman of Hind High Vacuum Company Private Limited, the first commercial vacuum technology company established in India at a time when the country was struggling for self-reliance. Before we proceed, we shall now take a moment to recognize and welcome the esteemed dignitaries who are here with us today. We are honored to have with us, ladies and gentlemen, Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India. A warm welcome to you, ma'am. Thank you so much for being here with us today. May I invite Sri M.G. Rajagopal, President CASIA, the Karnataka Small Scale Industries Association, to please felicitate madam. We extend a warm welcome to Sri Jitan Ram Majhi, Honorable Union Minister for MSME, Government of India, who is virtually present with us. May I request Sri Praveen Raghavendra, DMD SBI, to please felicitate him. Can we have the video, please? Yeah. Welcome, sir. Thank you for joining us. We have with us Sri Pankaj Chaudhary, Honorable Union Minister of State for Finance, Government of India. May I invite Sri M.G. Rajagopal, President CASIA, to please felicitate him. A very warm welcome to Sushri Shobha Karandlaje, Honorable Union Minister of State for MSME, Government of India. May I invite Sri Ganesh Rao, Vice President CASIA, to please felicitate. Please join us welcoming Sri Nagaraju Madirala, Secretary DFS, Ministry of Finance, Government of India. May I once again invite Sri Ganesh Rao to please felicitate.
We also extend a warm welcome to Shri Manoj Mittal, CMD SIDBI, Shri K. Satyanarayan Raju, MD and CEO Canara Bank, and Srimati Mani Mekhalai, MD and CEO Union Bank of India, Mr. K.V. Shahji, Chairman NABARD, Shantilal Jain, Managing Director Indian Bank. Warm welcome to all of you. We also welcome all dignitaries virtually connected with us all over. We have Shri C.S. Shetty, Chairman State Bank of India, MDs and CEOs of Punjab National Bank, Bank of Baroda, Central Bank of India, and EDs of other banks. Thank you so much, everyone, for joining us. Today's agenda is going to be action-packed. I'm very pleased to inform you all that during today's program, Honorable Finance Minister will interact with some of the MSME entrepreneurs present here and also with some of the representatives from the 150 plus MSME clusters virtually connected with us all across the country. Further, we are going to witness the inauguration of new branch offices of SIDBI, Union Bank of India, the Learning Center of Canara Bank, exchange of MOU between SIDBI and Pina Industries Association, and distribution of sanction letters to some of the MSME customers of Canara Bank, SIDBI and Union Bank of India. I would now invite Sri Nagaraju Madirala, Secretary DFS, to set the context of today's National MSME Cluster Outreach Program. Let's hear. That one. Good afternoon, everyone. I will be, if you all excuse, I will be speaking in English so that my Hindi is very poor. I can't speak. So, better I think, hope well. Honorable Minister of Finance, Madam Nirmala Sitharaman. Honorable Union Minister for MSME, Shri Jitan Ram Manji ji. Honorable Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary. Honorable Minister of State for MSME, Srimati Shobha Karanjala, and all my colleagues from the Ministry of Finance, Department of Financial Services, and CEOs of banks, all the entrepreneurs who have joined us kindly by sparing your time, media, and also all the several entrepreneurs, small entrepreneurs, businessmen who have joined us from 150 cluster places all over the country, along with bank CEOs, MDs, executive directors, and other senior officers. We all welcome to you, all of you. You know, today is a very important day for the country, in the sense that Honorable Finance Minister has been emphasizing the priority of lending and holding, guiding MSMEs in the country, so that they will be able to contribute to the growth and development of the country. Karnataka is one of the very more or less developing state, with a very robust MSME ecosystem and a lot of industries apart from the IT. And Bangalore, we are very close to Bangalore, and Bangalore is known for established IT infrastructure and also innovations. We are very fortunate today. You know, MSME contributes about 30% of the GDP and 41% of manufacturing and 46% of country's exports. We still want, we have great potential to both in exports and also contribution to GDP from the MSME sector. Given the size of our own country, number of population, and the level of education we have, expertise we have, MSME should be actually contributing much more. But nevertheless, we are on the way to contribute. And you know, this is the second largest sector contributing employment apart from agriculture. MSME is the only. Now we have about 540 lakh registered MSMEs in the country,
And Karnataka ranks number 5th in the country with the number of MSMEs registered with 35.5 lakh MSMEs. Now, India is, I think all of you are aware, Honorable Prime Minister's vision to Viksit Bharat by 2047, and then in the process that India will become actually third largest economy by 2028 if the current progress goes, overtaking both Japan and Germany in that year. In that year, India's GDP is estimated to be crossing $5 trillion US, and the gross value added by MSMEs in India's GDP was 30.5 in 1920. Despite unprecedented COVID conditions in the country, the sector contributed 27% in 2021 and rebounded to 30%, almost 30% in 2023. These figures highlight the sector's potential and significance in the country's growth, economic growth, stability, and importance to the country. The development of MSME is not only crucial for fostering entrepreneurship, but also important for promoting regional development and reducing economic disparities all over the country. Recently, Honorable Finance Minister announced in the budget that the Pradhan Mantri Mudra Yojana scheme, which was limited, has been increased to 20 lakhs. Initially, currently it is 10 lakhs. That Honorable Finance Minister announced that it will be increased to 20 lakhs. And recently, last week only, the orders have been issued. And the first loans actually have started rolling out. Honorable Finance Minister today formally will hand over a couple of loans to the beneficiaries of Tarun Plus. We are calling them as Pradhan Mantri Mudra Scheme under Tarun Plus. This new limit we expect that will ensure large number of MSME entrepreneurs will get benefited through the enhanced lending fund. And this is also guaranteed by the Credit Guarantee Fund for the MSME that is there with the Ministry of Finance. And apart from this, I think MSMEs also require support in terms of technology, in terms of marketing, in terms of skills required. And the SIDBI is there, I think CMD SIDBI is there. We would like SIDBI to play much higher important role to promote, to handhold, and also to guide the SMEs so that we have world-class SMEs in the country. In fact, world-class means world-class. If you can look at the countries like Taiwan, Vietnam, South Korea, and Japan, they have very world-class SMEs. Even the small number, anywhere between 25 to 100 people working in the SMEs, but the products are sold all over the world. We should specialize in some products. I think we should be able to do that, provided we have credit support, technological support, and then marketing guidance. Now, with the strengthened digital infrastructure, that public infrastructure we are doing, I think we should be able to leverage SMEs. The government is committed. Honorable Finance Minister is committed. Honorable Prime Minister is committed. Madam in her budget speech mentioned several times the importance the country is laying for MSMEs. And we are committed to promote MSMEs in all round, whatever is possible. And any entrepreneurs you are going to interact with Madam now, if you have any innovative ideas how to promote MSMEs, I think you should be very frank to share those ideas. We'll be welcoming that, we'll examine that, and would like to take forward. With these words, I would like again to thank Honorable Finance Minister, who has been taking a lot of time to go around the country to promote MSMEs. In fact, in the month of August, Madam was there in Udaipur, Rajasthan. After that, we went to Northeast, Itanagar, spent 3 days almost. Imagine a small place in Itanagar, which is located in between Myanmar, China, and this thing. Spent there. And then today we came here to Karnataka to promote the MSMEs. So that actually shows her personal commitment to promote MSMEs. And with these words, I thank once again all of you who have joined us
for this interaction session. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your words in setting the tone of the program. Since more than 3 decades, SIDBI has been instrumental in providing financial assistance and promoting growth in the micro, small and medium enterprises sector. To expand its outreach and facilitate easy access of credit to MSMEs, SIDBI is opening 6 new branches in Karnataka. May I request Honorable Finance Minister to virtually inaugurate the following branch locations in Karnataka. We have Tumkur, Shimoga, Mangalore, Raichur, Vijaypura, Kalaburgi, and also new office premise of SIDBI Peenya branch. Micro, small and medium enterprises are the backbone of India's economy. Small Industries Development Bank of India, or SIDBI, began its journey in 1990 and since has been playing a stellar role in promotion, financing and development of MSMEs. In its more than 34 years of existence, in addition to building a sizable direct finance portfolio, it has also launched pioneering initiatives in the areas of microfinance, green finance, digital platforms and startup finance. It works closely in the MSME clusters across the country to strengthen the MSME ecosystem. Pursuant to the budget announcement, SIDBI has embarked on a program to further increase its cluster outreach. SIDBI today is opening 6 branches in Karnataka in Tumkur, Shivamogga, Bengaluru, Kalaburgi, Vijaypura and Raichur and upgrading its Peenya branch. With this, SIDBI's reach will extend to 160 clusters all over India. It is a matter of great privilege for us that these branches are being inaugurated by Honorable Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman. Thank you very much, Honorable Finance Minister, for doing the honors. Nari Shakti Branch Office of Union Bank of India is a new concept which will go a long way towards women empowerment, enabling them to contribute further to the growth and development of our country. These branch offices of Union Bank of India are being opened at Bengaluru, Chennai, Jaipur and Visakhapatnam. May I request Honorable Finance Minister to please do the honors and inaugurate these 5 branches. Union Bank of India is proud to launch its Nari Shakti branches. In pursuit of the Government of India's initiative to empower women entrepreneurs and foster self-reliance, we are initiating Nari Shakti branches at Bengaluru, Chennai, Visakhapatnam and Jaipur. These branches are dedicated to women entrepreneurs and will provide credit facilities along with comprehensive advisory services, workshop for startups, mentorship and networking, skill development programs and more. We are delighted to dedicate our Nari Shakti branches to the nation at the hands of Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Minister of Finance and Corporate Affairs. Thank you very much, Honorable Finance Minister. We are sure that with the inauguration of the new learning center of Canara Bank, skill sets of their officers as well as other PSBs will improve further, thereby making them more empowered. I request Madam Finance Minister to please inaugurate the state-of-the-art Canara Bank Learning Center at Bagaluru, Bengaluru. Canara Center of Excellence. Inauguration by Srimati Nirmala Sitharaman, Honorable Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Government of India. Vidya Vindate Amritam. Learning bestows the nectar of life. That's why at Canara Bank, learning is a continuous process. To facilitate the highest standards of in-house staff training, Canara Bank is proud to unveil Canara Center of Excellence.
This new age training institution, spread across 6 acres, is strategically located in KIADB Financial City, just 10 kilometers from Bengaluru International Airport. Canara Center of Excellence is a green building with unique features. Basement plus ground plus 5 floors with a total built-up area of 1,35,000 square feet. Residential staff training facility with the state-of-the-art equipment. Canara Center of Excellence boasts of infrastructure that's beyond compare. To begin with, it has 3 smart classrooms with advanced audio-visual systems for executive training. To facilitate a comfortable stay, the center has well-planned accommodation. The front grass lawn offers a calming ambience, and the center is equipped with a wide range of facilities. The modern kitchen caters to the dining requirements of guests. Other notable features: solar power generation. Conceived with world-class infrastructure and benchmarked to high standards of excellence, the Canara Center of Excellence is poised to play a pivotal role in Canara Bank's vision of becoming the best bank to bank with. Canara Bank, together we can. Thank you very much, Honorable Finance Minister, for doing the honors. May I now request Madam Shobha Karandlaje to please address us. So I would like to address first. So I'd like to request Honorable Shri Jitan Ram Majhi sir to please. Shri Pankaj Chaudhary to please address us. कार्यक्रम में उपस्थित वित्त एवं कारपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वर्चुअली कनेक्ट केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय उमेश सुश्री शोभा करंदाजे जी, सेक्रेटरी डीएफएस श्री एम नागराजू जी, चेयरमैन सिडबी श्री मनोज मित्तल जी, सिडबी और बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया कर्मी, यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम बिजनेस घराने से लोग आए हुए, मेरे साथियों, मुझे सिडबी आयोजित एमएसएमई की सभा में उपस्थित होकर इस अवसर पर आप सबसे मिल करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और अभी जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने देश के अन्य अन्य भागों में महिला सशक्तिकरण के लिए बैंक का उद्घाटन किया और ब्रांचों का उद्घाटन किया, उसके लिए भी उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सूक्ष्म और लघु मध्य भारतीय उद्यम व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और जिसका देश में सकल घरेलू उत्पाद में 30% और विनिर्माण उत्पादन में 41% और निर्यात में 46% का योगदान है। एमएसएमई केवल व्यवसाय है, बल्कि हमारे देश में नवाचार, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है और सीमित औपचारिक शिक्षा रखने वाले सहित विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के लिए रोजगार का व्यापक अवसर का सृजन करता है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक असमानताओं को दूर करके सामाजिक विकास में एमएसएमई का योगदान अतुलनीय है और छोटे होने की वजह से एमएसएमई का महत्व और बढ़ जाता है। जब कभी कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो कहीं ना कहीं मटेरियल्स के दृष्टिकोण से, सप्लाई के दृष्टिकोण से जगह चेंज होता है और बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो आज आधुनिक युग में कहीं ना कहीं ज्यादा उसमें कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एमएसएमई आज हम कहीं ना कहीं देश में विभिन्न भागों में छोटे से छोटे जगहों पे जरूरत के हिसाब से एमएसएमई के माध्यम से हम वहां पर कहीं ना कहीं विकास करते हैं। तो और एमएसएमई अगले 3 वर्षों में भारत को जो सबसे तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था बनाना है, उसमें एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान होगा और 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें भी एमएसएमई की बहुत बड़ा योगदान होगा।
और अगर आप देखें तो 2014 के बाद से, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की देखरेख में, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी आए थे तो देश की अर्थव्यवस्था हमारी 11वें स्थान पर थी। और कोविड और दुनिया में वैश्विक तमाम युद्ध के बावजूद भी आज दुनिया में हम 5वें स्थान पर हैं और 2027 में निश्चित तौर से हम लोग 3रे स्थान पर पहुंचेंगे। वर्तमान में एमएसएमई के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें से एक है समय पर और सस्ते दरों पर लोन मिल पाना। सरकार एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीजीटीएम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और ऋण संबंध पूंजी सहायता योजना को सफलतापूर्वक लागू कर रही है। सरकार सिडबी और वाणिज्यिक बैंकों जैसी विकास संस्थाओं का मार्गदर्शन भी कर रही है ताकि वो भौतिक उपस्थिति और डिजिटल चैनलों के माध्यम से अधिक एमएसएमई तक पहुंच सके। पिछले बजट में ही माननीय वित्त मंत्री जी ने एमएसएमई को आसान ऋण उपलब्ध कराने की योजनाओं का घोषणा की थी, जिन पर आज कहीं ना कहीं उस पर काम चल रहा है। एनबीएफसी एमएसएमई के लिए क्रेडिट विकल्पों को शीघ्रता से और अधिक सुलभ बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एमएसएमई फंडिंग के लिए फिनटेक एक महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है। इससे विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कार्यशील पूंजी और अतिरिक्त सेवाएं जैसे इनवॉइस फाइनेंसिंग और टैक्स रिटर्न फाइल करने आदि में सहायता मिलती है। फिनटेक क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में भारत में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और इसका लाभ एमएसएमई को भी मिल रहा है। इन अनौपचारिक वित्त पोषण स्रोतों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए एमएसएमई के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत होकर औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होना और डिजिटलीकरण को भी अपनाना होगा। मैं वित्तीय संस्थाओं से आग्रह करूंगा कि एमएसएमई को औपचारिक रूप से देने में मदद करें और डिजिटल ट्रेल भी तैयार करें जिससे नियम आधारित त्वरित ऋण मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध हो सके। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केटिंग में एमएसएमई को अपने परिचालन में सुव्यवस्थित करने और घरेलू और वैश्विक स्तर पर व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंचने में सहायता प्राप्त हो रही है। एमएसएमई को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। एमएसएमई के वैश्विक पहचान बनाने के लिए अपनी उत्पादकता के प्रतिस्पर्धात्मक भी बढ़ानी होगी। वर्तमान समय में उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला कई देशों तक फैली हुई है। एमएसएमई को अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता तथा गुणवत्ता को बेहतर करना होगा और इन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण करना होगा। मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम में और विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं में एमएसएमई को उनकी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने में अपेक्षित सहायता प्रदान कर रही है। एमएसएमई के लिए ग्रीन प्रैक्टिस को अपनाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए एमएसएमई द्वारा खुद में निवेश करने की जरूरत है। पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाने से छोटे और मध्य उद्यम न केवल पर्यावरण की रक्षा में मदद कर सकते हैं बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्धा का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये पीनिया जैसे समूहों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा करके एमएसएमई वैश्विक परिदृश्य में भारत के पर्यावरण रक्षा के कमिटमेंट में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर सकता है। भारतीय एमएसएमई का परिदृश्य सकारात्मक दिखता है। इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने उद्यम को कौशल और प्रतिस्पर्धा में सुधार ला सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के विजन को साकार करने में एमएसएमई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि एमएसएमई को और मजबूत करें ताकि इसके महत्वपूर्ण योगदान से 2047 के विकसित भारत में का सपना साकार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for that very inspiring address. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। May I now invite Sushri Shobha Karandlaje to please address us.
माननीय निर्मला सीताराम जी, वर्चुअली जुड़े हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी जी, माननीय पंकज जी, मित्तल जी, नागराज जी, all the officials from Government of India, officials from SIDBI, Union Bank, Canara Bank and all the bank officers, सभी एंटरप्रेनर्स, भाइयों बहनों, अलग अलग देश का अलग अलग कोने में बैठे हुए सब मेरे बंधुओं, मीडिया फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि निर्मला जी मेरे क्षेत्र में 2 कॉन्स्टिट्यूंस में का प्रवास किया है, एक दासरहल्ली का, एक मल्लेश्वरम का, इसलिए उसको मैंने बहुत बधाई देती हूँ। केवल प्रवास नहीं किया है, बहुत सारे योजना लेके आई है। आज 6 सिडबी का सेंटर कर्नाटक में खोल रहे हैं, इसके लिए भी बधाई देती हूँ। यूनियन बैंक का अलग अलग जगह में ब्रांचेस खोल रहे हैं एंड मेरा क्षेत्र में तीसरा बागलुरु बैटरायनपुरा में आता है। बैटरायनपुरा में अभी कैनरा बैंक का ट्रेनिंग सेंटर भी हो रहा है, लर्निंग सेंटर भी हो रहे हैं, वो भी मेरा क्षेत्र है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪೀಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है, एग्रीकल्चर के बाद दूसरा बड़ा ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का एक क्षेत्र है। 21 करोड़ एम्प्लॉयमेंट आप दिया है, एंटरप्रेन्योर्स दिया है, इसलिए एंटरप्रेन्योर्स को मैं बधाई देती हूँ। इतना ज्यादा नौजवानों को, महिला को आप एम्प्लॉयमेंट दी है, इसका विस्तार करने का बहुत स्कोप है, क्योंकि मैडम जी ने पिछले बजट में एमएसएम का पारा पढ़ रही थी, हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे योजना को घोषणा भी मैडम जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में एक लक्ष्य है, देश का नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देना। एम्प्लॉयमेंट केवल सरकार नहीं दे सकते हैं, सरकार में कितना है एम्प्लॉयमेंट, केंद्र सरकार में कितना है, राज्य सरकार में पूरा मिला जुला के कितना है, बहुत कम है। इसके कारण एम्प्लॉयमेंट देने वाले एमएसएमई है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि एग्रीकल्चर से बहुत सारे नौजवानों बाहर आ रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं, इसके कारण वो किधर जाएंगे। आजादी के बाद ऐसे एक सोच था, महात्मा गांधी जी बोल रहे थे, छोटे इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, छोटे को मदद देना, छोटे ही हमारा देश का निर्माण कर सकते हैं। ग्रामीण इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज हमारा देश को बढ़ावा दे सकते हैं, ऐसे बोल रहे थे। मगर सत्ता के आने के बाद बड़ा बड़ा इंडस्ट्री को हम मदद किया। ये बड़ा इंडस्ट्री में कितना बचा है, इसको एक बार आंकड़ दिखाना, मैडम के पास आंकड़ है। हमारे राज्य में कौन कौन बड़ा इंडस्ट्री हम बनाए, एनजीएफओ, एचएमटीओ सब बंद पड़ा। क्यों? अलग अलग कारण है। पैसा तो दिया, एम्प्लॉयज काम में आया, बाद में अलग अलग कारण से वो बंद पड़ा। पूरे देश में ऐसे हुआ है। इसके कारण अभी ज्यादा लोगों को, ज्यादा नौजवानों को, युवतियों को काम देने वाले एक ही हमारा
तो बचा है वो हमारा एमएसएमई है। एमएसएमई में अलग अलग जगह में जाती हूं, सब जगह में एक ही बात बोलते हैं, एमएसएमई को हमारा टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना, फाइनेंस का मदद मिलना, तीसरा हमारा एम्प्लॉयज का स्किलिंग एंड अपस्किलिंग करना। ये बहुत बड़ा इश्यू है पूरा देश में। लेबरर्स तो मिलता है बट स्किल लेबरर्स कितना मिलते हैं वो बहुत बड़ा इश्यू है। स्किल्ड लेबरर्स का ऊपर ही हमारा प्रोडक्शन का पूरा हिस्सा बनता है। एंड मैं कभी भी जाती हूँ, मैं पहले कृषि मंत्री थी, फूड प्रोसेस का मंत्री थी, तब भी मैं वही बोलती हूँ, हम कुछ भी प्रोडक्शन करें वो एक्सपोर्ट क्वालिटी करे, कुछ भी करे। तो कृषि में मैं बोलती थी हमारे देश में हम खाने के लिए एक स्टैंडर्ड एंड बाहर बेचने के लिए दूसरा स्टैंडर्ड, ये कैसा होता है? हम क्या खाते हैं उसको हम पेस्टिसाइड रेसिड्यू का टेस्ट नहीं करते हैं, बट बाहर तो हम ऐसे नहीं बेच सकते। वो रेडी टू ईट हो, रेडी टू कुक हो, ताजा हो, पेस्टिसाइड का रेसिड्यू का आधार पर ही बाहर देश वाले लेते हैं। इधर भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं फ्रूट प्रोसेसिंग करने वाले। इसीलिए हम कुछ भी बनाइए अच्छा क्वालिटी बनाना चाहिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना चाहिए, हम खाने के लिए भी, हम बाहर बेचने के लिए भी। उसके लिए स्किल लेबरर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना चाहिए, मार्केटिंग के लिए सोचना चाहिए। मैं कृषि मंत्री थी, अब हम सब एम्बेसडर को एक बार बुलाया था, नाम था वो मिलेट का। फिर हमारा लक्ष्य था कौन सा देश का क्या चाहिए, उसका आधार पर हम प्रोडक्शन करना। कौन सा देश को क्या चाहिए, हम कुछ भी प्रोडक्शन करें वो उधर ही पड़ेगा, गोडाउन में रहेगा। इसीलिए कौन सा देश क्या चाहते हैं उसका आधार पर हम प्रोडक्शन बनाइए। ये केवल फूड प्रोसेसिंग के लिए नहीं है, ये हम सबको है। कौन कौन आज अलग अलग क्लस्टर में बैठे हैं, हम सबको है। डिमांड का आधार पर हम प्रोडक्शन बनाए। इसके कारण हम अलग अलग देश के साथ अभी जुड़े हैं, केवल फूड प्रोसेसिंग का नहीं, बाकी विषय में भी, बाकी टेक्नोलॉजी में भी, बाकी पार्ट्स में भी। अभी मैडम जी इंडस्ट्री में गई, बाहर देश में जाते हैं वो, बट ऐसा हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं क्या, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं सा, इसके बारे भी ऐसे हमारा भारत सरकार सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, एक्सपोर्ट बढ़ाना। अभी एमएसएमई का एक्सपोर्ट केवल 40% है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसका बारे में हम सोचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय में भारत सरकार सोच रही है। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बात पूरे देश में हो रही है। विपक्ष का लोग तो एम्प्लॉयमेंट कितना किया ऐसे ही बोलते हैं, बट मैं बहुत खुशी से बोलना चाहती हूँ, मैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का मंत्री भी हूँ। पिछले 6 साल में 6.5 करोड़ एम्प्लॉयज, नया एम्प्लॉयमेंट हम दिया है, वो ईपीएफओ में आए हैं। एम्प्लॉयमेंट दिया है ऐसे भाषण नहीं कर रहे हम, नया एम्प्लॉयज ईपीएफ से जुड़े हैं, प्रोविडेंट फंड से जुड़े हैं, ईएसआई से जुड़े हैं, उसका बात हम कर रहे हैं। कोई नहीं जुड़े हैं उसका बात नहीं। अभी भी हम 20 का ऊपर कौन इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं उसको हम काउंट कर रहे हैं, उसका नीचे कितना है। अभी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत हम बनाए, उसमें जुड़े हैं, वो 20 का अंदर ही है, उसका काउंट हम नहीं कर रहे हैं। नया स्टार्टअप का काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो 20 से अंदर ही आते हैं। उसके कारण पिछले 6 साल में लगभग हम 6.5 करोड़ लोगों को ईपीएफ से जुड़ने का काम हमारा सरकार किया है। आने वाले दिन में भी
जरूर इसके साथ हम काम करेंगे। एंड मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैडम को। बजट में भी एमएसएम का लक्ष्य रखी है एंड काम में भी हर बार हमारे से ज्यादा एमएसएमई से ज्यादा मीटिंग मेरे मैडम कर रही है एमएसएमई का विषय में, एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मदद करने के लिए। इसलिए आप सबको मैंने धन्यवाद देती हूँ एंड मैडम के डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक बात है, अभी मैं एनएसआईसी गई थी दिल्ली में, वो तो एक ट्रेनिंग सेंटर है एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। मुझे लगा उधर जाने के बाद ये साउथ इंडिया में नहीं है, केवल उत्तर भारत का लोग ही उधर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। मैंने सबको पूछा, अच्छा है, नॉर्थ इंडिया का बच्चे को ट्रेनिंग देने का बहुत अच्छा काम एनएसआईसी कर रहे हैं। मुझे लगा एक साउथ इंडिया में भी करना, इसका मैं ऑफिशियल्स को इधर भेजा। अभी पीना में हम एनएसआईसी का दूसरा सेंटर खोल रही है, ऑफिशियल्स आके इधर जगह ढूंढा। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जगह भी दिया है, कैबिनेट में लास्ट वीक पास किया है। अभी तुरंत ही हम इधर शुरू करेंगे, बाद में बड़ा जगह मिलने के बाद हम बड़ा जगह में भी उसको लेके आगे जाएंगे, फिर हम शुरू करने वाले हैं। ऐसे इंडस्ट्री को मदद देने के लिए, स्पेशली एमएसएमई को मदद देने के लिए जरूर भारत सरकार एमएसएमई डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट, स्किल ट्रेनिंग के लिए स्किल ट्रेनिंग अलग से डिपार्टमेंट मोदी जी ने बनाया एंड हर एक डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग हो रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में ट्रेनिंग मिल रहे हैं, कृषि में ट्रेनिंग मिल रहे हैं, नीति आयोग में ट्रेनिंग मिल रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिल रहे हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिल रहे हैं, आरडीपीआर में ट्रेनिंग मिल रहा है। अरे हर एक डिपार्टमेंट में अभी स्किलिंग एंड अपस्किलिंग का वो ट्रेनिंग का काम हो रही है। आज बैंक भी ट्रेनिंग सेंटर खोलने का एक घोषणा एंड इधर किया कैनरा बैंक। ऐसे तो बैंक वाले करते ही हैं, इधर फिर से एक सेंटर खोलने का घोषणा किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मैडम एंड पंकज चौधरी को। चौधरी जी हमारे क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र में इतना काम आगे बढ़ाने के लिए सोचे। ये पूरा केवल बेंगलुरु के लिए नहीं है, पूरा देश का काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे एंड जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। आपका बिजनेस अच्छा हो, हमारा क्या मकसद है, हम एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठे तो केवल सरकार को कुछ मिलता है ऐसा नहीं है, तो डायरेक्ट टैक्स मिलता ही मिलता है। कर्नाटका बहुत बड़ा स्टेट है, डायरेक्ट टैक्स देने वाले जीएसटी मिलते हैं। हमारे साथ सरकार का ये टैक्स एंड जीएसटी के साथ साथ आप भी बढ़ना, आपका इनकम भी बढ़ना, आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ये मकसद लेके हम साथ में जाना। क्योंकि मोदी जी का लक्ष्य है 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना। ये केवल सरकार का काम नहीं है, हम सब मिलके, हम सब जोड़ के 2047 में विकसित भारत बनाएंगे एंड देश को हर एक क्षेत्र में नंबर 1 बनाएंगे। इसके लिए आप सबका मदद चाहिए, आप सब मोदी जी के साथ चलना चाहिए एंड आपको मदद करने के लिए मैं सिडबी को कंग्रेचुलेशन देती हूँ। सिडबी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों को, बहुत एंटरप्रेन्योर्स को मदद दे रहे हैं, बैंक्स मदद दे रहे हैं एंड सिडबी का लक्ष्य तो मित्तल जी बता रहे थे, सिडबी का लक्ष्य है यही साल में हम 25 नया ब्रांचेस खोलेंगे, ऐसा लक्ष्य लेके सिडबी बैठे। इसीलिए सिडबी का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। जरूर आपका मदद चाहिए, अलग अलग विषय में मदद चाहिए, क्योंकि फाइनेंस मिले तो भी छोटा एक नया युवा सोच सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल मदद मिलेगा तो वो सोच सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए, नया स्टार्टअप करने के लिए, नया इंडस्ट्री बनाने के लिए सोचेगा। इसके कारण बैंक्स एंड सिडबी टुगेदरली यू आर हेल्पिंग आवर young generation, new industrialists, new entrepreneurs. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू पंकज जी। थैंक यू सो मच मैडम जी, आपका बहुत शुक्रिया। दैट वाज अ वेरी एनलाइटनिंग एड्रेस, थैंक यू।
I'd now like to request Honorable Shri Jitan Ram Naji to please address the gathering virtually. बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके कि जब हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री के स्तर पर वार्ता के लिए और बैंकों से सहायता के क्रम में जो आज बेंगलुरु में बैठक हो रही है, माननीय हमारे वित्त मंत्री वहां पहुंची हुई हैं। इसके लिए हम यही सोचते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि माननीय वित्त मंत्री आज हमारे यहाँ बीच उपस्थित हैं। माननीय वित्त मंत्री जी हाल में ही बजट में चालू MSME इको सिस्टम के लिए कुछ पहलों की भी घोषणा की है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज यहाँ माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी उपस्थित हैं, माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी उपस्थित हैं, माननीय MSME राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे जी हैं, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारीगण हैं, SIDBI के एवं बैंकिंग सेक्टर के अधिकारीगण हैं, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण हैं, मीडिया के मित्रों, आप सभी को इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बहुत सारी बातें अभी सुन रहे थे। हम कुछ पुरानी बात याद दिलाते हैं। जब एक जुमला कही जाती थी यहाँ, उत्तम खेती मध्यम बान नीज चाकरी भीख निदान, और आज सबके मुखार बिंदु से ये सुन करके कि कृषि के बाद जो हमारा MSME विभाग है उसका एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा योगदान है, तो हम समझते हैं कि ये पुरानी बातों का ही पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जिसके चलते अवरोध का भी सामना हमें करना पड़ता है। हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण योगदान करता है ऐसा बताता हूँ। विशेष रूप से विकासशील देशों में जहाँ रोजगार के अवसरों का सृजन और वैश्विक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहाँ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की विशेष महत्ता है। भारत में जैसा आप लोगों ने भी इस बात की चर्चा की कि MSME भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 30% और निर्यात के 46% हिस्सा है, और सूक्ष्म व्यापार इकाइयों को लेकर मध्यम आकार के निर्माताओं एवं निर्यातानों इकाइयों तक फैले हैं, और ये MSME भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल श्रृंखला के मूल में है। दूसरे शब्दों में ये विकास का इंजन है, मैं ऐसा मानता हूं, जैसा आप लोगों ने भी कहा। और हमारे MSME भी विकास को समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि समाज के कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों के लोगों के साथ साथ बड़ी संख्याओं में महिलाओं को भी मालिक और श्रमिक दोनों रूप में इन उद्यमों में हिस्सा मिलता है। और खास करके युवाओं के संबंध में भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार युवाओं के बारे में कहा करते हैं, वो आप लोग सब अवगत हैं कि हिंदुस्तान में युवाओं का प्रतिशत संसार में सबसे ज़्यादा है। वैसी परिस्थिति में जब 140 करोड़ हमारी आबादी है, वैसी परिस्थिति में अगर हम 58% युवाओं की संख्या को जोड़ते हैं तो हमारी संख्या बेरोजगारों की करोड़ों में हो जाती है। वैसी परिस्थिति में सरकारी तंत्र कोई ऐसा नहीं है कि जहां हम उनको नियोजन दे सकते हैं। वैसी परिस्थिति में लघु और सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हमारी एक ऐसी विधा है कि जहां हम उनको इंगेज करते हैं। और इस माने में एक बात और जो हम बहुत पहले भी कहते हैं और यहाँ भी दोहराते हैं कि एक ऐसा समय था कि हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता था, और जगत गुरु कहलाता था वहाँ पर किसी प्रकार से कोई बेरोजगार नहीं हुआ करते थे, कोई गरीब नहीं हुआ करते थे, सब तरह से सक्षम थे। कब? उस समय ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो आज 24,000 हमारे बड़े उद्योग हैं लगे हुए हैं, ये नहीं थे। हमारे जो आज 6 करोड़
लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग हैं, यही उस समय सरवाइव करते थे और यही मिल करके आज भारत के इकोनॉमी को इस ढंग से बढ़ा दिया था कि संसार में सबसे आगे बढ़ गया था। आज आवश्यकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए वो तत्पर हैं। बार बार उनके दिमाग में यही बात आती है कि हम एमएसएमई को कैसे बढ़ावें और यहाँ के बेरोजगारों को कैसे हम रोजगार दें। ऐसी दृष्टिकोण से हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो एमएसएमई का जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, व्यक्तियों को अनेक रोजगार संभावनाएं प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकरण करके आय वितरण में असमानता को कम करने में सहायता करता है। ये एक मूल मंत्र है जिसके चलते हम कर सकते हैं कि हमारा एमएसएमई है जो खास करके बेरोजगारों का बेरोजगार चाहे महिला हो या जेंट्स हो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये काम करता है। और दिनांक 1/7/2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल के शुभारंभ से आज तक कुल 5.43 करोड़ एमएसएमई पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें से कर्नाटक में खास करके, चूंकि कर्नाटक में ये कार्यक्रम चल रहा है इसलिए कर्नाटक का नाम लेना उचित है। कर्नाटक में खास करके 5.16 लाख एमएसएमई हैं और उद्यम में खास करके 17.44 लाख हैं। यूपीए में, उत्तर प्रदेश में 17.72 लाख के साथ साथ 5वें स्थान पर कर्नाटक है। पंजीकरण एमएसएमई द्वारा दर्ज कुल रोजगार, जैसा कि सब लोग कहा, 22 करोड़ 88 लाख से अधिक है, जो कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदानदाता है, जिसकी चर्चा मैंने किया कि आज जो पुरानी बात हम लोग कहते थे आज वही बात यहाँ पर अभी तक हुआ है। इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपको मैं बताता हूँ कि रोजगार देने में भी अभी तक 35% हमारा ये जो एमएसएमई है ये प्रदान करता है, जो कोई ऐसा विभाग नहीं है जो इतना बड़ा रोजगार लोगों को देता है। हम प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यवसायों के लिए अपनी मूल गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना और प्रतिक्रियाओं को, औपचारिकताओं और कागजी कार्रवाई का बोझ कम करना महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु कई पहले की है। हाल के वर्षों में शुरू की गई अधिकांश स्कीमों में पहले जैसे उद्यम पंजीकरण पोर्टल, उद्यम असिस्ट पोर्टल, समाधान पोर्टल, चैंपियन पोर्टल, रैंप और पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बोझिल प्रक्रियाओं को कई परतों पर समाप्त किया गया है और निर्बाध और लागत मुक्त तथा कागज रहित तरीकों से महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंचाने में की सुविधा किया है। कहने का मतलब कि एमएसएमई जो कैसे सरल हो और कैसे इसके तहत लोग पहुंचे, इसी के तहत ऐसा कार्यक्रम किया गया है। और इस माने में एक चीज, हमारे बैंक के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और आप लोग जानते हैं कि हम निरा रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और आज भी हम रूरल एरिया में रहते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि बैंकों का जो सहयोग होना चाहिए छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स को, वो सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसके चलते बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है। इस माने में ऐसे तो अन्य विधाओं में हमारी सरकार या हमारा विभाग है 3% तक के उन्होंने गारंटी दी है और गारंटी देने के बाद उन लोगों को कहा है कि भाई आप बैंक लोन दीजिए। सबसे बड़ी बात सब्सिडी में बात आ जाती है। सब्सिडी नहीं मिलने के चलते हमारे जो बैंकर लोग, जो हमारे उपभोक्ता हैं, वो इधर उधर मारे फिरते हैं या कुछ रिलक्टेंट होकर के कहते हैं कि साहब इससे कोई फायदा नहीं है। तो हमारा कहना है कि जब तक हमारे एमएसएमई से सब लोग नहीं जुटेंगे, छोटे छोटे लोग हैं, जैसे उद्यम असिस्ट है, उद्यम असिस्ट में हमारे छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर होते हैं, मोची जूता बनाते रहते हैं सड़कों पर, दर्जी भाई वो कपड़ा सीते रहते हैं, वो कोई गिलास बनाते रहते हैं, कोई यूटेंसिल बनाते रहते हैं, कोई कपड़ा बनाते रहते हैं, कोई अगरबत्ती बनाते रहते हैं। ये सब लोग को अगर ठीक ढंग से हम लोग आगे बढ़ावेंगे तो निश्चित है कि नियोजन की जो पावर है और नियोजन जो हम लोग करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी का ये जो
विजन है कि हम सबको नियोजित कर सकें, ऐसा करना बड़ी जरूरी है। और ऐसा तब होगा जहां बैंकों का सक्रिय सहयोग होगा। और बैंक के बारे में मैं तो इतना कहना कह सकता हूं, हो सकता है कि हमारी बात थोड़ा सा ऐसा लगे कि मैं अवांछित बात कर रहे हैं, कि जब भारत सरकार आपको गारंटी दे रही है कि आप लोन दीजिए गरीबों को, तो वहां पर आप क्यों मुट्ठी बांधते हैं, क्यों उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं? और उसमें फिर बीच में मिडिल मैन लोगों की भी कुछ बातें आ जाती है, भूमिका आ जाती है, जिसके चलते मिडिल मैन या उसके जानकार लोगों को ही फायदा होता है, बाकी लोग डिप्राइव्ड हो जाते हैं। इस चीज के लिए हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहते हैं बैंकिंग सिडबी के लोग चाहे और लोगों को, कि साहब ऐसा बात न करके करीब उन लोगों को ऐसा कीजिए कि आपके पास अप्रोच करें और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, ये हम अनुरोध करना चाहते हैं। जैसे उपकरण है, पुर्जा है और घटकों का विनिर्माण एवं अन्य क्षेत्रों के साथ साथ सेवाओं के लिए आपूर्ति का अपार संभावनाएं हैं इसमें, और एमएसएमई इसमें महत्व भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उत्पादन करके अनुकूलशीलता और क्षमता दिखलाते हैं। इस क्षेत्र अधिक रोजगार सृजन और सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात से अधिक योग देने में सक्षम है। जैसा पहले भी कहा कि हर तरह से हम निर्यात भी दे सकते हैं, रोजगार भी दे सकते हैं, बशर्ते कि इसको आगे बढ़ावें। तो इसी तरह से खास करके जब कर्नाटक में बात आई है तो हम कहना चाहते हैं, कर्नाटक में उद्योगों का विस्तार हुआ है और पिछले 1.5 दशकों में कर्नाटक और विशेषकर इसकी राजधानी बेंगलुरु में वैश्विक स्तर पर आईटी उद्योग के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वैसे हमारे राज्य मंत्री ने कर्नाटक के बारे में भी कुछ कहा कि वहाँ ज़रूरत है, और उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की बात उन्होंने कह दी। खास करके हमारे एनएसआईसी के बारे में उन्होंने कहा कि दिल्ली में है, उत्तरी भारत में है, दक्षिणी भारत में होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि जैसे क्वायर बोर्ड है, क्वायर बोर्ड हमारे उत्तरी भारत में कहीं नहीं कोई नाम नहीं जानता है, और क्वायर बोर्ड के माध्यम से हम बहुत लोगों को दे सकते हैं नियोजन, और हमारा एक्सपोर्ट भी आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए बैंकिंग विधाओं के लोगों से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि क्वायर बोर्ड जो है वो इधर उत्तरी भारत में भी आवे, और उसके लिए जो भी करना पड़े करना चाहिए। हम समझ रहे हैं इशारा को। और उसी तरह से एमएसएमई भारत में विकसित भारत का 2047 की यात्रा के प्रमुख स्तंभों में से एक है और बना रहेगा। हमारी सरकार रोजगार सृजन और इसके साथ साथ देश के विनिर्माणकारी उत्पादों और निर्यातों में एमएसएमई की महत्व भूमिका को देखते हुए इसके विकास के अधिक महत्व और प्राथमिकता देती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार और उसका समय विकास एमएसएमई के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। एमएसएमई को अपने व्यापार प्राप्तियों की नकदी में परिवर्तित करने में अपनी कार्यशील पूंजी को अनलॉक करने की सुविधा देने के लिए बजट 2024 और 25 में ट्रेंड प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑन बोर्डिंग के लिए खरीदारों की टर्नओवर सीमा को 500 करोड़ रुपया से घटाकर 250 करोड़ रुपया करने की भी घोषणा की है। इसके लिए मैडम फाइनेंस मिनिस्टर को धन्यवाद देते हैं। और इस उपाय में ट्रेड प्लेटफॉर्म पर 22 अतिरिक्त सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्रेन्योर तथा 7,000 अतिरिक्त कंपनियों का आ जाएगी, जिससे एसएमई आपूर्तिकर्ताओं को काफ़ी मदद मिलेगी। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इससे संबंधित बजट के घोषणा के उपरांत एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसको आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम उम्मीद करते हैं बैंकों का पर्याप्त सहयोग मिलेगा और उत्तरी भारत में भी जो अभी हर तरह से एमएसएमई क्षेत्र का विकास न हो पाया है, इसमें बैंकों का सहयोग मिलेगा। ऐसे मंत्री होने के नाते हमारा फर्ज है, मैं करूंगा, लेकिन बैंक से भी मैं उसमें आशा का सहयोग का आशा करता हूं। इसी चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Minister. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। We'll now have the signing of the MOU. SIDBI and Pina Industries Association have been working together for quite a long time for the benefit of MSMEs. To formalize this association and to take it to newer heights, today SIDBI and Pina Industries Association are exchanging an MOU.
Besides capacity building of the association by SIDBI, the association would refer its members to SIDBI for sanction of credit facilities for which SIDBI has graciously agreed to share a portion of fee with the association. Thank you. Ladies and gentlemen, the Tarun Plus scheme was announced by our Honorable Finance Minister in her Union Budget for such Tarun beneficiaries who have successfully repaid their loans. May I now request Honorable Finance Minister to hand over sanction letters to 5 MSME customers of Canara Bank under the Tarun Plus Yojana of Mudra. May I also request Managing Director Canara Bank to please join us. Idagunji Enterprises has been sanctioned financial sanction of 15 lakhs. This is a first generation women entrepreneur engaged in aluminium fabrication. Ms. Ruplata is here to collect the sanction letter. First, last week only uploaded this. First one. First one. Shri Sai Krishna DXN Health Palace, they've been sanctioned 20 lakhs. The firm is engaged in sales of food supplements. From 10 years they've been in the business. Shri Krishnappa is here to collect the sanction letter. Manju Enterprises engaged in manufacturing of machine tools has been sanctioned 15 lakhs. We have Shri Bhaskar to collect the sanction letter. Shri Anand TG engaged in operating tours and travels. They've been sanctioned 15 lakhs for purchasing vehicle for expanding operations. We have Shri Anand TG to collect the sanction letter. SMS Engineering has been sanctioned 20 lakhs. They are engaged in cutting machine tools. We have Shri Murthy to collect the sanction letter. Under this scheme so far, they have 11 sanctions for a total of rupees 1.7 crores. Thank you, Honorable Finance Minister, for doing the honors. I now request Honorable Finance Minister to hand over sanction letters to MSME customers of SIDBI. VAM Group has been sanctioned 140 lakhs. Under the newly launched scheme Cash Defense, the firm is engaged in manufacturing of precision sheet metal and machine components used in aerospace and defense industry. Mr. Girish is here to collect the letter. Inviting Ms. Sanya Khanna from Bliss Aerospace Components Private Limited for being sanctioned 15 crores. 15 crores for the expansion project. They are engaged in manufacturing of precision components and fasteners for aerospace industry. I'm sure it's so heartening to see youngsters so involved in such high-tech businesses. Congratulations.
Mr. T.N. Paramashekharappa and Mr. Kiran Kumar from Rajeshwari CNC Machining Technologies engaged in manufacturing and designing of general engineering components. They are sanctioned 13.56 lakhs. Srimati Vinita from Sense Mill Aero Solutions engaged in manufacturing of precision machine components for various sectors including aerospace. They've been sanctioned 66.44 lakhs. Sharda Roofing Industries, Shri Manish Patel, they've been sanctioned 100 lakhs, engaged in manufacturing of color-coated roofing sheets. Herms Laboratories Private Limited, we have Shri Suryakant. They are engaged in developing, manufacturing and marketing of quality basic drug and specialty chemicals. They've been sanctioned 14.86 lakhs. Shri Prakash Ayyappa from Shri Sainath Dal Industries engaged in manufacturing of grain mill products. They've been sanctioned 97.5 lakhs. Srimati Anu Gupta from Kavya Engineering Private Limited engaged in manufacturing of precision components and they've been sanctioned 44 lakhs. Aditya Exports engaged in processing of cashew nuts and exporting to Kuwait and UAE. They've been sanctioned 74.47 lakhs. Shri Aditya Arpa is here in Bangalore, but he couldn't make it because he's not well. So I'd like to request Mr. Ravindran from SIDBI to please accept the letter on his behalf. QNU Labs Private Limited, Shri Mark Matthias, a pioneer of quantum technology in India catering to defense and government organizations. They've been sanctioned 500 lakhs. Shri Vijay Kumar from Vermax Technologies engaged in manufacturing of precision machine components used in automobile, aerospace and general engineering. They've been sanctioned 24.5 lakhs. Madam, as you see today, SIDBI has distributed 11 sanction letters aggregating to rupees 25.75 crores to different enterprises ranging from production of grain mill products to manufacturing of high-end machine components used in defense, is also to enterprise engaged in quantum technologies. This shows our commitment in supporting traditional as well as high-tech enterprises with same spirit and enthusiasm. Honorable Finance Minister, thank you very much for doing the honors, ma'am. I now invite two MSME Nari Shakti beneficiaries of Union Bank of India to receive sanction letters from the hands of Honorable Finance Minister. May I also invite Managing Director of Union Bank of India to please join us on the dais. Bhavatewala and Company engaged in manufacturing and trading of pure Mysore silk and twisted silk yarn. They have been sanctioned 650 lakhs. We have D.N. Mirabai to collect the sanction letter. Ms. Sarojama from Elsa Consultancy engaged in trading of electricity, power and consultancy services. They've been sanctioned 450 lakhs.
Once again, thanking Honorable Finance Minister for doing the honors. Thank you, ma'am. She learned, and then now she's reading. She's not even able to understand how this is. I told her, I told her you speak in Kannada. Maybe after seeing Minister speaking, can stop. Ladies and gentlemen, now the moment has come for which we've all been waiting for. May I now have the privilege and honor in inviting Honorable Finance Minister Madam to kindly address the gathering. Yeah, display. Namaskar, Honorable Minister, Senior Minister Shri Jitendra Manji ji, who's joining us virtually, my colleague in the Cabinet and the Council of Ministers, Pankaj Chaudhary ji, my colleague again in the Council of Ministers, but my senior in Karnataka, Nari Shakti, and also the MP from this area, Minister of State in the Union Council of Ministers, Shobha Karandlaje ji, Secretary DFS, Nagaraju ji, SIDBI's Chairman, MD, Mittal ji, and all the CMDs of public sector banks who have joined us today, the entire Peenya community of small and medium industries, and for the various MSME clusters who have joined us from different parts of the country. And I understand Senior Minister Jitendra Manji ji is in Gaya. Even there is a very big cluster. And I'll start with an assurance to Senior Minister Jitendra Manji ji that I'm visiting Gaya also. And I'm sure all the bank managers and CMDs will visit Gaya. Thank you. And that much attention we gave for Peenya and entire Karnataka, we'll give for Gaya and entire Bihar also. Under Prime Minister Modi, no state will be left behind. We'll attend to every state. And no MSME will be left behind. We'll attend to every MSME. And this is not something by word of mouth that I'm saying. I'm sure any MSME in any part of this country will say, and I don't want to start with a challenge, but I certainly will ask if there is even one MSME in this country which was untouched by our banks during the COVID pandemic. पैंडेमिक के समय देश में ऐसे एक भी एमएसएमई नहीं होगा। मैं सीनियर मिनिस्टर मांझी जी के लिए मेरा टूटा फूटा हिंदी में ये कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत समझ रहे हैं हम लोग। ऐसे एक भी एमएसएमई नहीं होगा जिनको हमारे बैंकों ने कोविड के समय ना टच किए होंगे। सबके पास मैसेज पहुंचा, सबके पास फोन कॉल पहुंचा, सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के अनुसार हमारे बैंकों ने उस समय हर गरीब को जैसे अन्न मिला उस समय और आज तक मिल रही है, मुफ्त में अनाज मिल रही है, उस मॉरेटोरियम के समय, कोविड के समय हर एमएसएमई के पास मैसेज गया, फोन कॉल गया, बैंकों के द्वारा बैंक मित्र जाकर उनसे बात किया कि आपको इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लिक्विडिटी स्कीम में कुछ करना है क्या। और बैंक को यह अधिकार नहीं था कि आप किसी को मना कर सकते हैं, किसी को मना नहीं किया। हर एमएसएमई को
ECGLS के द्वारा उनका अगर जरूरत पड़े तो मदद मिला ही मिला। ऐसे ही मैं आश्वासन दिलाना चाहती हूं MSME मिनिस्टर को, और उनके विभाग है इसीलिए उनके साथ भी लूंगी कि MSME को इस बार बजट में जो 5 अनाउंसमेंट्स हुआ है उसमें से 4 आज से जरूर लागू होगा। सिर्फ एक जो गारंटी का 100 करोड़ का गारंटी का अनाउंसमेंट हुआ है उसका कागज कैबिनेट में पहुंचने वाले हैं जल्द से जल्द। सेक्रेटरी DFS हैं इधर। कैबिनेट के अप्रूवल मिलने के तुरंत बाद वो 100 करोड़ का गारंटी जो हम दे रहे हैं MSME मिनिस्ट्री के द्वारा और बैंकों के द्वारा, वो जो गारंटी मिलेगा वो भी लागू हो ही जाएगा। मैं हर क्लस्टर MSME क्लस्टर को जाकर मैं खुद मीटिंग ले रही हूं। जैसे सेक्रेटरी बैंकिंग ने बताया, उदयपुर में गई थी, आज पीनिया में हूं। हर MSME के पास, क्लस्टर के पास, और मैं MSME क्लस्टर का सूची मेरे पास नहीं है, MSME मिनिस्ट्री में है। उनके लिस्ट अगर मेरे पास नहीं आता मैं उधर तक पहुंचना भी मुश्किल समझती। इसीलिए हर बार मंत्री जी को, मांझी जी को फोन करके हम उनके आशीर्वाद और उनके प्रेजेंस के लिए भी बात करते हैं कि आप भी शामिल हो जाइए, क्योंकि MSME को आपके द्वारा ही विश्वास पैदा करना है। मंत्रालय उनका, बजट में घोषणा हुआ, ठीक है, मगर ये 5 ऐसे कार्यक्रम जिसका आप एक आज देखा भी है, मुद्रा में तरुण में जहां 10 लाख तक सीमित था लोन, आज 20 लाख तक बढ़ाया गया है। कल परसों ही उनके मंत्रालय के द्वारा और DFS के द्वारा ऑर्डर भी निकला। ऑर्डर कल निकला, आज 11 लोगों को कैनरा बैंक से तरुण कैटेगरी में तरुण प्लस का बेनिफिट मिल रही है। ये 5 लोग जो मेरे सामने आए और बाकी लोगों को भी मैं बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि वो तरुण पहले में भाग लिए, अच्छा सा उसका फायदा उठाए और सही समय पर वापस भी दिया पैसा। आज इसीलिए उनको वो एनहांस्ड लिमिट में दोबारा तरुण प्लस में भी मिल रहा है। MSME का क्रेडिबिलिटी यही, वो कभी भी जो बैंकों से ऋण लेते हैं उसको अच्छा सर्विस भी करते हैं, उनका बिजनेस भी बढ़ाते हैं। So I just want to, because I'm in Bangalore, I want to highlight the fact which has been said by many of them already. Karnataka has a very big share in MSME. You may rank 5th, but you are doing some of the very unique things. Like we saw about how an aerospace component manufacturer came to take the loan from SIDBI. There is one little element which I want to highlight here in favor of SIDBI. SIDBI has understood how business requirements for small industries vary from company to company. Unlike the way the large companies have a very standardized process of operation, their business cycle is very well understood. So when you provide loan to them, the template before the banks are already there. But when it comes to SIDBI, when it comes to small businesses, to understand their cycle, business cycle and their requirements, and then to tailor make the product which the bank can extend to the MSME is a skill in itself. Many public sector banks are only now sitting up to that challenge. I don't think it is a shortfall from the public sector banks, particularly the large banks, but it is more like because they are doing many other things, this becomes one of the several things they do. And now they are able to understand the requirement is
to be tailor-made, and therefore they have a set of specialized people who are dealing with it. That's why today you saw one bank, Canara Bank, doing it. You saw another Union Bank doing it. I'm sure many others will soon follow. But what SIDBI has done is something which I would like to highlight. I'm sure I'm not going to define it all, describe it all, but I just heard the CMD tell me that for a company which is doing very well, an MSME, which is doing very well and which is in defense production, they did not want to dilute their shares by offering equity to somebody else, even if it is SIDBI. At the same time, they were in need of more money for expanding the business, probably even to export. SIDBI has come up with a very tailor-made, unique portfolio, which is not giving him an equity, but he's giving a debt, but yet recognizes the possibility of that business widening without diluting the promoter's share. The details, I'm sure the CMD will do some time, but I've instantly taken that as an example to say SIDBI understands small businesses. SIDBI can deal with MSMEs' credit requirements and tailor-make products for the credit requirement of MSMEs. And that is why SIDBI's presence in MSME clusters will do immense benefit for the MSMEs. And that is one of the reasons why we have come up with this point of eventually, within a matter of 2 to 3 years, SIDBI will be present physically in every MSME cluster. Now, they're expanding little by little. This year, like Minister said, SIDBI will open 25 branches in clusters this year, but gradually they will be moving towards every cluster a SIDBI. And because of that, I think the cost of loans that small businesses will take from them directly will be far lesser than when that money is given to the public sector bank or banks and then forward lending. So there can be that advantage which SIDBI can give directly. That doesn't stop you from going to the PSPs, because they also understand the importance of MSMEs and their business requirements. The share of MSMEs, the contribution that MSME is making to India's gross value addition to export, I'm not going to elaborate on that, that's already been said. Honorable Minister Maji has also explained how the Udyam portal has 5 crore registrations, MSME registrations. And together the MSMEs are providing 21 crore jobs. Only Karnataka has 35 lakh MSMEs and they provide 1.65 crore employments. So all that is there, and the role of MSME, therefore, there's no exaggeration and there is no gainsaying that you contribute majorly to India's economy. But what I want to highlight here, even at the cost of repetition, is the 5 main things that we've done in this budget. For MSME in specific, introduction of a special credit guarantee corpus to help MSMEs, and that will be very helpful during the time of distress. Introduction of a new credit guarantee scheme, which I told you will have to go to the cabinet. Sooner it will go and you'll get the benefit of it in the manufacturing sector to facilitate term loans for MSME. The grievance, which has been for a very long time, is that MSMEs get working capital from banks. They don't get term loans for plant and machinery. Now, with this guarantee, which was announced in the budget, for up to 100 crores, the guarantee will be provided, even if you are going to borrow more from the banks for the first 100 crores, the guarantee will be given.
and therefore you are going there collateral free to that extent. You don't even need a third party guarantee. No collateral, no third party guarantee. Government gives you the guarantee for up to 100 crores. Then public sector banks will develop a new credit assessment model. Most often the grievance has been banks give us the loan, but about us they have no idea. In old-fashioned banking, local people were appointed in some branches. Local people used to be manning local area branches, and therefore they knew which business is what is their potential, what is their credit worthiness, and based on that, they will be talking to the client and determining their credit worthiness. Now, because it's outsourced, people who don't know you, your credibility, your potential, are assessing you. And the grievance has been, no, they don't understand us. And therefore, the credit assessment made about us is always underplayed. We don't get justice. But now we have announced in this budget that banks will do the credit assessment within themselves. Each bank will have their own credit assessment model. Eventually, these models will talk to each other, and therefore, there cannot be wide discrepancy between one bank's credit assessment towards and in comparison to the other banks. But banks will do it on their own now. Mudra loan limit was already mentioned, 10 to 20 lakhs, and that's already given effect, and you saw beneficiaries already. SIDBI branch, over the next 3 years, like I said a minute ago, this year will open 24 branches, and then it will reach its all of the cluster 168 major MSME clusters as well. So this will improve the credit access to MSMEs. There are a few other things which the minister himself said. The turnover threshold for TREDS participation has been brought down from 500 crores to 250 crores. So the trade receivable discounting system will benefit smaller units further. Cumulatively, 98.9 lakh invoices amounting to 2.9 lakh crores have been discounted on the TREDS platform as of March 31st, 2024. That's not a small sum. So supporting MSMEs for better liquidity and working capital management. Then investment ready, another announcement in the budget. Investment ready plug and play industrial parks will be set up with complete infrastructure, and they're not going to be set up too far away. They will be near 100 cities in partnership with the states and with the private sector. So you are in Peenya today. Hopefully with the cooperation of the state government here, sooner we'll be able to have an industrial park not far away from here, and that will benefit you because Peenya is already fully saturated. I'm sure we are doing this with other states, about 100 of them will be set up.